Frankenstein, a novel by Mary Shelley. It is a Gothic novel, and let's begin with it. So, if you are new to my channel, my name is Hira, and if you haven't already subscribed to my channel, subscribe down below, comment, and share as much as you can. So, before we begin into this novel, I'll talk about the author and the era from which Mary Shelley used to belong to. So, let's begin with it. The topics which I am going to discuss is about the author, introduction of the novel, summary and the plot, characters, description, themes, symbols, motives, literary devices, and the critical analysis and conclusion of this novel. So now talking about the author, which is Mary Shelley, she wrote a novel Frankenstein, and she's a novelist, a short story writer, dramatist भी है, essayist भी है, biographer भी है और ट्रेवल राइटर भी है. तो फ्रैंकनस्टीन जो है असल में वो गॉथिक नावल है, मतलब एक हॉरर फिक्शन. So another name for Frankenstein is the modern Prometheus, which was first published in 1818. तो मैरी शेले के जो लाइफ के इंटरेस्ट थे वो साइंस में था, पॉलिटिकल अपहीवल्स में है, पर्सनल ट्रेजेडीज़ में था जो कि रिफ्लेक्ट करता है इसके वर्क्स में. और शी हैड प्रोफाउंड इंटरेस्ट इवन इन सोशल इश्यूज ऑफ हर टाइम, सो शी यूज्ड टू राइट अबाउट इट. एंड शी इज़ द प्रोमिनेंट रोमांटिक राइटर्स, ठीक है, रोमांटिक राइटर्स में ये एक प्रोमिनेंट मेंबर है. एंड शी यूज्ड टू बिलोंग टू 19th century, early 19th century. So to talk about a bit of a novel, so Frankenstein is written by Mary Shelley. Time and again I am telling you guys this. So it talks about and it examines the boundary of science and human nature, और nature में किस तरह ये लोग interfere करते हैं human beings. As the novel इसमें बताया गया है कि even Shelley, when she wrote this novel, she was 18 years old and she published it anonymously. तो इस नावल में बताया गया है कि विक्टर फ्रैंकनस्टीन जो है वो एक एक्सपेरिमेंट करता है, साइंस, एक यंग साइंटिस्ट होता है और उससे फिर ये एक ह्यूमन बनाना चाहता है जिसकी वजह से एक मॉन्स्टर बन जाता है. सो लेट्स अनफोल्ड द स्टोरी दैट व्हाट हैपेंस लेटर ऑन विद दैट मॉन्स्टर. तो लोग असल में भी कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस. सो दिस इज़ व्हाट इट सेज. मैरी शेले जो है रोमांटिक एरा से बिलोंग करती थी, इंग्लिश लिटरेचर के, जो कि लास्ट करता है लेट 18th century टू मिड 19th centuries में. और रोमांटिक एरा इज़ नॉट अबाउट रोमांस एंड ऑल, इट इज़ अबाउट हाउ अ पर्सन इज़ कनेक्टेड टू नेचर एंड गॉड एंड हाउ द नेचर अपील्स टू हिम और हर. तो मैरी शेले ने जब फ्रैंकनस्टीन नावल लिखा था तो इसमें इसने एक लड़का होता है विक्टर फ्रैंकनस्टीन, वो एक साइंस का एक्सपेरिमेंट करता है एंड ही मेक्स अ मॉन्स्टर आउट ऑफ इट. अब ये जो साइंस के साथ हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सो इट इज़ लाइक इन अ सेंस दैट कि हम लोग नेचर को अपने हाथों में ले रहे हैं, इवन दो दिस इज़ नॉट आवर जॉब टू मेक ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स. तो विक्टर फ्रैंकनस्टीन जो है वो एक ह्यूमन बनाना चाहता है जो कि या जिसमें इतनी एक्सटेंट तक क्वालिटीज़ होंगी, नो फ्लॉज, जस्ट क्वालिटीज़, जो कि ह्यूमन से एक लेवल आगे होगा क्वालिटीज़ में, एंड ही वुड बी एबल टू डू एनीथिंग. सो इसीलिए विक्टर फ्रैंकनस्टीन ने एक चीज़ बनाई थी जो कि वो एक अलग सी ही चीज़ बन गई थी, एंड इट वाज टर्म्ड एज अ मॉन्स्टर. Mary Shelley was more inclined towards supernatural things or nature and sublimity. Sublimity का मतलब things that are original rather than the versification. Before we begin into the plot, let's talk about four of the characters that are present and discussed in this novel. One is the Victor Frankenstein, जो कि एक experiment करता है और उससे एक monster बन जाता है. Is considered to be a young scientist और इसको बहुत शौक होता है, and he's obsessed with the idea of creating something in life. Now talking about the monster, the monster is created by Victor Frankenstein and this monster is intelligent and is emotional. But असल में जब एक society एक चीज़ को accept नहीं करे, वो किस basis पे accept नहीं करती? Because a person looks too ugly and because of his appearance definitely. So then he thinks that okay, I should seek revenge, or
इसी वजह से जो कि विक्टर फ्रैंकेनस्टीन ने ये मॉन्स्टर बनाया होता है, तो ही वांट्स टू डिस्ट्रॉय नाउ विक्टर हिज क्रिएटर। इसमें थर्ड कैरेक्टर इज़ ऑफ एलिज़ाबेथ। एलिज़ाबेथ जो है विक्टर की फियांसे होती है, and she is very pure. It is more of a contrast to the darkness that is present in the Victor's character. Then we have Henry, who is the best friend of Victor, and he is morally and practically very good towards life. तो अब नॉवल के जो टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो विक्टर फ्रैंकेनस्टीन है और मॉन्स्टर है। टॉकिंग अबाउट विक्टर, तो इसकी चाइल्डहुड में ही ये बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करता था साइंस को। तो इसने यूनिवर्सिटी में भी इस तरह साइंस कुछ पढ़ी थी और इस ये एक्सपेरिमेंट्स करता था, एंड देन ही फाइनली सक्सीड्स इन क्रिएटिंग अ क्रिएचर। ठीक है, ये क्रिएचर बनाता है जो कि कहता है एक ह्यूमन से अच्छा होगा, बट दैट टर्न्स इनटू अ मॉन्स्टर। मॉन्स्टर हरकतों से नहीं या नेचर से नहीं, बट जस्ट उसके फिजिकल अपीयरेंस है वो इतना हॉरिबल था या अगली था कि उसको लोग मॉन्स्टर कहते थे और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो इसीलिए इस मॉन्स्टर ने विक्टर को कहा था कि ओके यू शुड मेक अ मेट फॉर मी, अनदर पर्सन फॉर मी, अ फीमेल वर्जन, एंड देन आई विल गो इन दी फॉरेस्ट, और जंगल में मैं चला जाऊंगा सोसाइटी को छोड़ के, और मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूँगा। मॉन्स्टर की ये डिमांड सुन के विक्टर रिफ्यूज़ कर देता है, क्योंकि मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ही हैड पावर ओवर ह्यूमंस। उसके पास ज़्यादा पावर थी ह्यूमन से, और विक्टर सोच रहा था व्हाट इफ़ दुनिया में एक टाइम आए जब मॉन्स्टर्स टेक ओवर कर लें इस वर्ल्ड को और ह्यूमंस ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे। तो इसीलिए विक्टर ने रिफ्यूज़ कर दिया, एंड इसीलिए मॉन्स्टर ने कहा कि ओके आई वुड बी टेकिंग रिवेंज, और वो चाहता है कि अब विक्टर मर जाए। तो विक्टर को मारने से पहले इसने सारे विक्टर के क्लोज फ्रेंड्स या पीपल हु वर क्लोज टू विक्टर, इसने सबको मार दिया था। जिसको ये सारे मॉन्स्टर कह रहे होते हैं, असल में ये एक ह्यूमन होता है जो कि ही कैन थिंक, टॉक, वॉक, एंड ही कैन एक्ट लाइक अ ह्यूमन, बट पीपल डिक्लेयर्ड हिम एज अ मॉन्स्टर। मॉन्स्टर जो है विक्टर को कह रहा होता है मिन्नत समाजत करके कि ओके यू शुड मेक अ मेट फॉर मी एंड आई विल बी गोइंग टू अ फॉरेस्ट एंड आई वोंट कम बैक। तो इस टाइम पे विक्टर कहता है कि नो आई वोंट मेक अ मीट फॉर हिम, एंड विक्टर मॉन्स्टर से भाग रहा होता है। तो विक्टर जो है अपने आप को मार देता है और मॉन्स्टर उसके पीछे जा रहा होता है। देन मॉन्स्टर विजिट्स हिज बॉडी बिकॉज ही वाज द ओनली वन हु कैन क्रिएट अनदर क्रीचर फॉर हिम। जब विक्टर मर जाता है तो इसकी ग्रीफ में फिर मॉन्स्टर मर जाता है, वो अपने आप को मार देता है। तो ये नॉवल इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि इट टॉक्स अ लॉट अबाउट कॉशियस इन लाइफ। तो इसमें जो थीम्स हैं वो है डेंजर ऑफ एम्बिशन है। आप एक चीज़ के पीछे इतने नहीं लग जाया करो बिकॉज इट वुड लीड टू डिस्ट्रक्शन। देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड नेचर। और फिर रिपरकशंस हैं ऑफ प्लेइंग विद द गॉड्स क्रिएशन और द नॉलेज यू हैव, द लिटल नॉलेज यू हैव। तो विक्टर फ्रैंकेनस्टीन को यूज़ किया गया है डेंजर्स ऑफ एम्बिशन में, एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्लेइंग विद फोर्सेस बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। इसमें एक कोटेशन भी है ना कि इफ़ यू डोंट गेट बर्न अ लिटिल व्हाट्स द यूज़ ऑफ प्लेइंग विद द फायर। तो आप जब एक चीज़ फायर के साथ खेल रहे हो तो यू विल गेट बर्न। नाउ विक्टर फ्रैंकेनस्टीन जो है एक क्रिएचर बनाना चाहता था दैट वुड हैव बियॉन्ड एंड फ्लॉलेस क्वालिटीज बियॉन्ड ह्यूमन बींग्स। So definitely that led to him his demise or death. This novel talks about how dangerous, and it is about the dangers of blindly pursuing scientific progress without considering the ethical implications. So हर जगह पे implications होते हैं, wrong and right होता है, so we should talk about and dive deep into it before we get it to the conclusion of it. Now, apart from the dangers of ambition, which is the theme, conflict between nature and science, we have other minor themes such as loneliness, isolation,
and the danger of prejudice. So loneliness इस तरह है कि विक्टर फ्रैंकनस्टीन भी lonely हो जाता है. He's away from his family, and then when he makes a monster, that monster is very lonely and he's in isolation, and because of that isolation or loneliness he demands for another creature or companion. Then we have symbolism as light and darkness, fire and the moon, the conflict between evil and good, and the power of knowledge. How do we use knowledge as a source? And then we have foreshadowing. फोरशैडोइंग का मतलब है अगर एक ऑथर फोरशैडोइंग यूज़ करता है, सो ही वांट्स टू इंडिकेट दैट व्हाट विल हैपन इन द नियर फ्यूचर इफ़ यू डू दिस थिंग. देन मैरी शेले हैज़ यूज्ड illusions, मतलब कोई ऐसे रेफरेंसेस, एंड देन सिंबलिज्म टू emphasize the novel's central themes. Throughout the novel हमें जो भी स्टोरी मिल रही है उसके themes उस पर डिपेंड कर रहे हैं. There are multiple narrators as well, and there is flashbacks, flash forwards, and the demise or the complexity of the plot is death. So if we talk about critical analysis, so this is a significant work of a Gothic fiction, horror fiction hai. This novel is a significant work of romantic literature. So this is a Shelley's legacy as a groundbreaking author continues to be celebrated to this day. Then we have time and again I'm talking about the major themes: human nature, science, ambition, morality. क्या कि आगे पीछे स्टोरी रिवॉल्व करती है. Thank you so very much for watching this video. Like, subscribe and share if you haven't already before. I'll meet you guys in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.